1st February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Moneycontrol. Log on to www.moneycontrol.com for more. Good afternoon and welcome everyone to Moneycontrol live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. Well, bulls started off the day on a firm footing but seem to have lost their grip by the end of the trading session. Benchmark indices closing flat after failing to build on Monday's strong rally. The Nifty has once again been unable to get past its 50-day moving average. It was widely thought that the index would be able to do that today given the overall upbeat mood in global markets, but that was not to be. Both indices closing flat. But the main weakness largely in second line shares, mid cap indices closing in the red today after a very strong performance on Monday. The Nifty, the India VIX also has been flattish at about 13.6. Among the prominent gainers today, we had shares largely from the auto and FMCG and IT sectors doing well, whereas pharma, metals and banking shares were under pressure today. Big gainers in the Nifty today, Maruti, Tata Motors, Bajaj Auto, HCL Tech and HDFC Bank, whereas among the prominent losers, Axis Bank, Power Grid, Hindalco, SBI Life and Grasim closed in the red. Well, Yatin, market clearly seems to be showing some signs of fatigue there. Good Absolutely. Numbers are also not really helping lift the mood. Yes, two, three things, Santo, which I observed this time. सबसे पहले अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के रिजल्ट्स आए, इंक्लूडिंग कोटक बैंक. नंबर्स वर अबव एस्टिमेट्स, लेकिन स्टॉक के रिएक्शंस ही नहीं हुए. दूसरी तरफ आईटी सेक्टर जिसको लेके काफ़ी कंसर्न्स थे, मुझे लगता है कि जो हिसाब से पोजीशनिंग थी शॉर्ट्स की आईटी सेक्टर में, वो अब किल हो रहे हैं और आईटी सेक्टर जो है पिछले 3-4 दिनों से आप देखोगे तो मूव कर रहा है. तो शायद पैसा जो है बैंकिंग से मूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आईटी स्टॉक्स में. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आज की अगर हम मार्केट की बात करें तो एकदम लैक लस्टर ट्रेड, 18,200 का हाई और वहाँ से लगभग 100 पॉइंट हमने स्लिप कर दिया. लगभग फ्लैट क्लोजिंग आपको निफ्टी की और सेंसेक्स की दिखाई पड़ेगी. निफ्टी बैंक, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप लगभग आधे % नीचे बंद हुए और शायद इसीलिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 7:12 आज बाजार में दिखाई पड़ा. तो ब्रॉडली सैंटो जैसे आपने कहा थोड़े बहुत थकान, और मुझे लगता है इवेंट बहुत बड़ा है, बजट का इवेंट लोगों को लगता है बहुत बड़ा है और शायद इसीलिए मार्केट बहुत ही सुस्त आपको दिखाई पड़ रहा है. इनफैक्ट ऑप्शन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे सैंटो तो कोई बड़ी प्रीमियम एक्टिविटी आपको नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसका मतलब ये है सब लोग इवेंट के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आर्बिट्राजर हो, सब जगह आप देखोगे तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत लल है. So clearly the market seems to want to get the budget out of the way, and the big concern still remains to be, I think, looks to be the LTCG or Correct. change in LTCG structure Correct. that the market is worried about. Well, that said, let's move on to the stocks on our watch list this afternoon, stocks that caught our attention, beginning with SBI Cards. The company reported its latest set of quarterly numbers. However, clearly the market not seem to be very happy there. The stock has been under pressure and today has fallen to a 6-month low. The big concerns mainly is the steady decline in the revolver, the share of the revolver book. The revolver here basically means that the customers who carry forward their credit outstanding by paying the minimum amount. Now that as a share of the book was about 45% about 2 years back, according to CNBC TV18 analyst Abhishek Kothari. That number has now shrunk to about 24%. It's almost half there. The company did manage to arrest the steady decline in its yields though, but overall if you look at the longer term picture over the last couple of years, yield too have been steadily on a decline. They've fallen from about 19% to around 11% now. So these are the two big concerns, although
SBI Cards did manage to retain its market share, and the number of new additions were also quite robust at about 62%, and overall total cards in issue are still 20% higher than what they were during the same period last year. Yet the disenchantment of the market over the stock is very evident. It's been slowly losing ground. It did see a powerful rally sometime in June, but after touching about 1000 odd, the stock has been steadily slipping. क्लियरली सैंटो, और अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, और एसबीआई कार्ड बहुत ही सेंसिटिव रहता है अपने एसेट क्वालिटी को लेके, क्योंकि जो अर्निंग्स की सेंसिटिविटी है, क्योंकि आप एक कार्ड कंपनी है, ज़्यादातर आपकी लेंडिंग अनसिक्योर्ड होती है, तो रिकवरीज में काफ़ी दिक्कत होती है। जो आपके एनपीए जो होते हैं यहाँ चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवरी के, या बहुत ही बैंक्स के मुकाबले यहाँ आपको डिफ़िकल्ट होता है जो एनपीए हैंडल करना, तो शायद बाज़ार को ये बात पसंद नहीं आई। चलिए, जैसे कि मैंने आपको येस्टरडे बताया था कि स्टॉक्स इन फोकस में हम बजट रिलेटेड चैट करेंगे आपके साथ हर रोज़ बजट तक, और आज का जो सेक्टर मेरे फोकस रिडार पे है वो है डिफेंस। येस्टरडे हमने कैपिटल गुड्स के बारे में बात की थी, लेकिन आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस बजट रहता है क्योंकि आउटले बहुत बड़ा है, और इस साल सैंटो अनुमान ये है ब्रोकरेजेस का कि 20 से 25% तक आपका डिफेंस आउटले बढ़ सकता है। तो पिछले साल के मुकाबले इस टाइम डिफेंस बजट बढ़ा हो सकता है, और जो फोकस रहेगा वो रहेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे। कहाँ खास करके एरोनॉटिक्स, यानी जो एयरक्राफ्ट बनाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, जो इंसेंटिव्स चाहिए, जो सरकार का सपोर्ट चाहिए, वो एक्सटेंड किया जा सकता है। ड्रोन के बारे में ऑलरेडी सरकार ने पीएलआई के बारे में बात की, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन्स के ऊपर आ सकती है। तो ड्रोन एक ऐसा सेगमेंट है जहां आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है बजट में। इसके अलावा आर्मी के लिए भी आपको मेक इन इंडिया के तहत काफ़ी सारी चीज़ें प्रोक्योर करती हुई दिखाई दे सकती है सरकार, क्योंकि सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोटिव ये है कि 65% जो आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो इंडिया या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के जरिए होना चाहिए। डिपेंडेंस हम कम कर रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्टोरी आपको डिफेंस में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये एक सेक्टर फोकस रिडार में है। और स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो मिसाइल सिस्टम्स के लिए ऑब्वियसली जो चीज़ें लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की कंपनीज, वो है बीडीएल और बीईएल। ऑब्वियसली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि बड़े ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं एयरफोर्स की तरफ से, तो ये एक स्टॉक ऑब्वियसली फोकस पर रहेगा। बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, भारत फोर्ज, एलएनटी, सीमेंस, सभी कंपनीज कहीं ना कहीं अपना डिफेंस एक्सपोजर बढ़ा रही हैं। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में सैंटो इंडिजिनस वॉरफेयर सिस्टम्स का डिस्प्ले भी होगा। तो जो टैंक्स हैं, जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, एएनआई ने आज रिपोर्ट किया है कि 26 जनवरी को एक बड़ा सरकार वहाँ डिस्प्ले करेगी। Well, my quibble against the sector still remains the same. We discussed this yesterday also. This has been one of the best performing sectors over the last 6 months. Much of the positives already have been priced in. I think probably here on, even like we saw in the case of bank earnings, where the numbers were quite strong, but the stocks aren't quite performing. The story does appear to be good from, let's say, the next 5-year perspective, but how much of it has been priced, already priced in the short term, that's the big question. I feel that personally a lot of it is already reflecting in the prices. हो सकता है सैंटो, देखिए, लेकिन जो सरकार माहौल बना रही है वो बहुत ज़बरदस्त बना रही है, लॉन्ग टर्म बना रही है डिफेंस कंपनीज के लिए। क्योंकि एक बात तो तय है, जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और स्पेशली ये रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद आप देखेंगे जो हमारे पास सोवियत मेड वेपन सिस्टम्स हैं, उनकी सर्विसिंग, उनका एम्यूनेशन मिलना मुश्किल हो गया। और आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज दिस कि अब जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो बहुत कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपको डोमेस्टिकली चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ताकि एक वॉर लाइक सिचुएशन जब हो जाए तो आप किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें, खुद की चीज़ें खुद ही बनाएं। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। प्राइस कितनी हुई है, यहाँ से कितनी अपसाइड होगी, लिस्टेड कंपनीज के थ्रू कितनी चीज़ें होगी, क्योंकि अनलिस्टेड प्लेयर्स भी इतने ही बड़े हैं इस सेगमेंट में। तो देखा जाएगा कैसे सरकार इस बजट में अपना डिफेंस एलोकेशन बढ़ाती है और डिफेंस पे क्या कमेंट करती है। Well, with that we move on to the last stock on my watch list, which is Sun TV Network. Again, this has been one of the underperformers over the last few months, stock falling to a 6-month low. Yatin, things appear to be looking slightly better for the company after the first quarter earnings, but since the second quarter numbers, again, bears seem to have taken over the stock, which is also showing a very bearish sign on the charts. Out of 6 of the moving average indicators, all of them are showing a negative, a bearish sign, and same holds true for the technical indicators as well, where
6 out of the 7 technical indicators are showing a bearish sign. Besides that, the company's been having some fundamental issues as well. One mainly is that it's not been able to get its OTT strategy right, which is where some of the other media firms have been able to move forward. Then you also have the softness in advertisement revenues, which has hurt media companies across the board. So these two factors put together seems to have soured the sentiment for Sun TV. Although valuations are beginning to look very attractive, the stock had fallen to as low as about 400 rupees a year back. Since then it has covered some of the lost ground. But the other one thing that seems to be worrying the market is also corporate governance standards, which has been an issue with the market for quite some time, which is why the stock always has had an issue as far as valuations are concerned. And I think Santo, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं. एक तो प्रमोटर्स बहुत ही बड़ी सैलरी ड्रॉ करते हैं, चाहे कोविड के साल हो, चाहे खराब समय हो, अच्छे समय हो. प्रमोटर्स ने बहुत ही हेफ्टी सैलरी, द मारन फैमिली, प्रमोटर फैमिली, इन्होंने अच्छी सैलरी ड्रॉ की है. शायद इन्वेस्टर्स उसको लेकर कंसर्न होते हैं, और जो बैलेंस शीट पे कैश है वो भी शायद शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हर दूसरे तीसरे क्वार्टर रूमर होता है कि सन टीवी में एक बड़ा डिविडेंड आ सकता है, एक बायबैक आ सकता है, लेकिन समहाउ जो इनके बुक्स पे कैश है वो भी शेयर होल्डर्स को लौटाया नहीं गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की यही होती है कि वेल्थ क्रिएट हो जब कंपनी कोई एक बड़े रिवॉर्डिंग चीज़ें शेयर होल्डर के लिए करें. तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू मार्केट रेड फ्लैग करता है हमेशा, और शायद इसको इतने प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए. जो एनालिस्ट की अंडरस्टैंडिंग और जो एक्सपर्ट जिनसे हम बात करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. Well, and with that, it's a wrap on this episode of Closing Bell. जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And in the meantime, for all news, views, analysis, stay logged on to moneycontrol.com. We'll be back with you again at 9 a.m. tomorrow morning. 1st February 2023, the Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the last full union budget before 2024 elections. India's most awaited financial event comes in the midst of global slowdown, inflation, liquidity tightening, geopolitical tensions, and re-emergence of COVID-19. Will India look to fire up its manufacturing? Will India build a moat against global uncertainties? What will the budget have for the middle class? Watch the complete coverage of Budget 2023. Real-time analysis, expert takes all day on Moneycontrol. Log on to www.moneycontrol.com for more.